सो 15.4 क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज 29.2 shall prevent the state from making any special provision for socially and educationally backward class. Clause 4 was added by the first Constitution Amendment Act. लिखो, fourth clause 4 was added, 15 clause 4 was added by the fourth clause 4 was added by the Constitution First Amendment. Clause 4 was added by the first Constitution Amendment 1951. Clause 4 was added by the first Constitution Amendment Act of 1951 to override the judgment of Champakam Dorai Ranjan. To override the judgment of Champakam, Champakam, Champakam Dorai Ranjan. To override the judgment or overrule the judgment of Champakam Dorai Ranjan versus State of Madras 1951. Dorai Ranjan, Champakam Dorai Ranjan versus Madras, State of Madras 1951. In that case, in this case, caste-based distribution of seats. Caste-based distribution of seats was held violative of Article 15(1). Caste-based distribution of seats. Caste-based distribution of seats was struck down, violating Article 15(1). Violating Article 15(1). In 15(4), two things needs to be considered. In 15(4), two things needs to be considered before providing reservation. In 15(4), two things needs to be considered. In 15(4), two things needs to be considered for providing reservations. Two things needs to be considered for providing reservation. In public education institutions, number one, who are SEBCs? Number one, in public education institutions. So two things needs to be considered. पहली चीज कि आपको पता लगाना है कौन लोग हैं जो SEBCs हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. सेकंड है व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन. व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन. व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन. अरसलान की तबीयत सही नहीं है, उसका दांत का ऑपरेशन होगा आज. व्हाट इज SEBCs या फिर who are SEBCs, and second is what is the limit of reservation. What is the limit of reservation? नहीं, ये हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. चंपकम रोजाई रंजन में क्या हुआ था कि बहुत सारी जो सीट्स थी ना वो कास्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कर दिया था. तो जो लड़की थी ना उसने चैलेंज किया था. सो इट वाज द एडमिशन पॉलिसी वाज स्ट्रक डाउन. इट वाज वायलेटिव ऑफ 15(1). उसको ओवरकम करने के लिए 15(4) का गठन होता है. 15(4) को इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इररेस्पेक्टिव ऑफ वायलेटिव ऑफ 29(2). कभी भी याद रखो, तभी तो मैंने बोला था टिफ एंड टाइड बिटवीन, एक क्वेश्चन लिखवाया था ना, टिफ एंड टाइड बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशरी, बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. तो टिफ एंड टाइड का मतलब है पहले क्या होता है, पहले कोई जजमेंट आता है, उस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है हमेशा. ठीक है, लिखो आगे. लिखो सोशली, लिखो स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट मींस, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट means things of wider import and not just reservation in education institutions. Things of wider import means things of wider import and not just reservations in
things of wider import and not just reservation in education institutions. And not just reservation in education institutions. It may be financial assistance, medical assistance. Things of wider import means things of wider import. It may be financial assistance, medical assistance, concessions, free education, free residence, free housing, etc. Financial assistance, medical assistance, free housing, financial assistance, medical assistance, concessions, etc. The scope of Article 15.4 was discussed. The scope of Article 15.4. The scope of Article 15.4 was discussed in State of Mysore. The scope of Article 15.4 was discussed in State of Mysore versus Balaji. या फिर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर लिखो. The scope of 15.4 was discussed in Balaji versus State of Mysore, 1963. That is 15.4 not only enables the state. That is 15.4 not only enables the state for making. 15.4 not only enables the state to make special provisions to make special provisions for backward classes and not exclusive provision for backward classes. Special provisions बनाने, exclusive नहीं बनाने. Special provisions for backward classes and not exclusive provisions for backward classes and not exclusive provisions for backward classes. There is no obligation imposed on the state. There is no obligation. There is no obligation on the state that state shall make. There is no obligation on the state that state shall make those special provisions. There is no obligation on the state that state shall make such special provisions. हाँ, obligation नहीं है किसी तरीके का. The state may act on the basis of discretion. The state can act on the basis of its discretion. Act. The state can act on the basis of its discretion. The state can act on the basis of its discretion. The state can act on the basis of its discretion and not arbitrarily. The state can act on the basis of its discretion and not arbitrarily. And not arbitrarily. Now 15.4 हो गया. 15.5 देखो क्या कहता है. Nothing in this article or in clause 5, clause 19(1)(g) shall prevent the state education institution में ये 15.5. 15.5 भी लिख लो. 15.5 भी लिखो. 15.5 ये 15.5 ऐड होता है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. आज सिर्फ बेयर एक्ट लिखवाऊंगा, बेयर टेक्स्ट लिखवाऊंगा. 15.5 के बारे में लिखो. It was added by the 93rd Constitution Amendment Act. 93rd Constitution Amendment Act कब आया था? 2006. It was added in 93rd Constitution Amendment Act. It was added in 93rd Constitution Amendment Act in the year 2006. In the year 2006. It provides that state can make provisions by law.
state can make special provisions by law for the welfare of by law for the welfare of SEBCs and scheduled caste and scheduled tribes for the welfare of SEBCs and any SC and ST with respect to admissions in education institutions with respect to education institutions including private 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 education institutions whether aided or unaided whether aided or unaided whether aided or unaided apart from whether aided or unaided apart from minority institutions instituted under Article 30 Clause 1 including minority institutions instituted under Article 30 Clause 1 अगर एक्सक्लूड नहीं होगा so general concept of equality will pervade in these institutions कभी भी equality अचीव नहीं हो पाएगा unequals will remain unequals ठीक है so जो minority education institutions हैं उनको स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि माइनॉरिटी को माइनॉरिटी क्यों बनाया तुमने माइनॉरिटी को माइनॉरिटी स्टेटस इसलिए दिया है ताकि स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ देम ठीक है अब एक चीज लिखो Sir, which means it will also work in retrospect because जैसे Muslim Law University, Aligarh Muslim Law University है, though it is a minority institution and established for minority, but ये minority बहुत पूरा ये मतलब ये institution is even before they were declared as minority. The faculty long backs to like approximately 200 years ago. ठीक है So उस समय so will this also work in retrospect? नहीं जब लॉ बनता है ना तो लॉ जो बनता है वो लॉ पॉलिसी डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रीसेंट सेंसेस ये माइनॉरिटीज हैं इनके वेलफेयर के लिए मुझे लॉ बनाना है ठीक है रेट्रोस्पेक्टिव लॉज आर बैड लॉज तो ऐसे आप कंसिडर नहीं करेंगे कभी भी But will this be applicable on the institution that were running from ages is what my question is. हाँ क्यों नहीं हो सकता जो कहने का मतलब है जब कभी फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट कंटेंट हुआ तभी तो उसके ऊपर नाउ व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन जो चीज हो गई है उसको तो आप बदल नहीं सकते मगर आज के बाद आप तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग तो आपका रूल है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने का रूल है ये तो हमने इंटरप्रिटेशन में ही पढ़ लिया था जो हो चुका है उसको तो आप नलीफाई नहीं कर सकते मगर अब जो होगा वो हो सकता है ऐसा हाँ Article 15 clause 5 says that nothing in this article of 19(1)(g) shall prevent the state from making special provisions including admission to private educational institutions also but it's excluding minority educational institutions that the state cannot make provision for admission to minority education. However, regulatory provisions पे होंगे इस पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं हमारे पास जैसे अजीज बादशाह करके एक जजमेंट है इस्लामिक सोसाइटी करके जजमेंट है सेंट स्टीफन्स है तो ये सब जजमेंट जब पढ़ेंगे ना तब हमें रूल क्लियर हो जाएगा यस मगर रूल तो ये भी है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में हाँ पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कंसेप्ट है स्प्रिंकलिंग इफेक्ट का एक कंसेप्ट है
कहने का मतलब है सोसाइटी को अगर कंप्लीटली तुम आइसोलेट कर दोगे माइनॉरिटीज को, तो वो माइनॉरिटीज कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप परमिसिबल लिमिट्स में आप एडमिशंस दोगे, है ना। हालांकि अगर आप मेजोरिटी ऑफ द सीट्स आप डिक्लेयर कर सकते हो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए हम इस कॉलेज बना रहे हैं, कर सकते हो, है ना। सो पूरा रूल पढ़ेंगे, लिखो 15/5 जो है ना, इसका जो प्रभाव है 15/5/93/26 में आता है, 2006 में। एक बात ध्यान रखना, जब भी अमेंडमेंट होगा तो उससे पहले जजमेंट्स आपको पढ़ने हैं। कौन सा जजमेंट है? टीएमए पाई। तो 93rd अमेंडमेंट जो था ना, उसका पर्पस था टीएमए पाई जजमेंट को के इफेक्ट को नलिफाई करना। लिखो, दिस अमेंडमेंट वाज मेड, दिस अमेंडमेंट वाज डन फॉर द पर्पस ऑफ नलिफाइंग, this amendment was done for the purpose of nullifying, this amendment was done for the purpose of nullifying the effect of TMA Pi Foundation, TMA Pi Foundation, पाई PAY, पाई मत बना देना, पाई चार्ट, TMA Pi Foundation judgment, TMA Pi Foundation judgment and PA इनामदार, PA इनामदार, TMA Pi Foundation, TMA Pi PA इनामदार था, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बताता हूँ, PA इनामदार, it was in 2005, TMA Pi, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। TMA Pi case was in year 1993, नहीं 2002, TMA Pi was in 2002, 2002, 2006 में तो अमेंडमेंट हुआ है ना, 2006, 2002। So this 93rd amendment was to nullify the effect of PA इनामदार एंड TA Pi। PA इनामदार कौन सा साल था? 2005, और ये 2002। ठीक है, लिखो, in which it was held, 2002। नहीं, PA इनामदार was in 2005, सॉरी, PA इनामदार 2005 में था। TMA पाई जो था, PA इनामदार, पाई, in which the government, in which the state, in which the court held, the court held that in which it was held that the government cannot make reservation of seats, government cannot make reservation of seats for SC and STs and backward classes in private education institutions. Government cannot make reservation of seats, government cannot make reservation of seats in educational institutions, in private education institutions, sorry, private education institutions for backward SC and ST. ठीक है, 93rd Constitution Amendment exempts, 93rd Constitution Amendment exempts the minority education institutions, exempts the minority education institutions established under Article 30 Clause 1,
minority education institutions established under Article 30 Clause 1. Established under Article 30 Clause 1 of the Constitution. Under Article 30 Clause 1. Under Article 30 Clause 1 of the Constitution. Under Article 30 Clause 1 of the Constitution. Full stop. Article 15(5) amplifies. Article 15(5) emphasizes or amplifies whatever is stated in 15(4). Article 15(5) emphasizes whatever is stated in 15(5). Article 15(5) amplifies whatever is stated in 15(4) by mentioning educational institutions, by specifying educational institutions, the state can make this discrimination. The state can make special provision only by law and not by executive action. State can make special provision by executive action and not state can make special provision by law and not by executive action. Not by executive action. And not by executive action. And not by executive action. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लॉ किसी भी तरीके का. अब देखो मजेदार बात, अब आता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास 15(6) वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6. Nothing in this article or clause 19(1)(g) or article 29(2) shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5. ठीक है, so any provision for the advancement of socially and educationally backward classes, so state can make laws other than the clauses 4 and 5. So state can make welfare provisions for the welfare of SC and ST. तो अब क्या क्या हो गया, SCBCs भी हो गए, socially and educationally backward classes, SC और ST भी हो गया, और एक और कैटेगरी EWS हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ठीक है, बहुत ही ग्रे एरिया है ये. आई एम सॉरी टू स्टेट दिस. बहुत ज्यादा फेक इसमें वो आते हैं. ठीक है, ये जो है ना, इसमें ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो इशू हो गए हैं और लोगों ने नौकरी लेके अभी गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए, स्क्रूटनी है ही नहीं किसी तरीके की. ठीक है, सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. नाउ दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन से साल का था, देख लो, 2019. तो स्टेट कैन मेक लॉज. Any special provision for the advancement of education, economically weaker section of citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5 insofar as such special provisions relates to their admission to educational institutions, including private education institutions, whether aided or unaided by the state, other than minority education institutions referred to in Article 31, which in the case of reservation would be in addition to the existing reservation and subject to maximum of 10% of the total seats in each category. इसको अंडरलाइन कर लो. ठीक है, क्या है लास्ट पार्ट है other than minority education institutions referred to in Article 30 clause 1, which in the case of reservation would be in addition to the existing reservations. को अंडरलाइन करो. It is in addition to the existing reservation. तो education institution वो addition reservation मतलब अभी तक जो permissible limits है it is 50. By 3rd constitution amendment 10% more has been introduced.
ठीक है, इट शैल नॉट बी maximum of 10% of the total seats in each category, subject to 10% of total seats in each category, 10% of each seats in the total. ठीक है, तो 10% of total seats, ये नहीं है, तो 10% of total seats in each category. नहीं, चेंज 50 के ऊपर है. ठीक है, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, इसको ब्लॉक्स में लो. इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा वाज चैलेंज्ड इन, देखो, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, द कॉन्स्टिट्यूशन, है 15(6), द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसके ऊपर है? इन एडिशन टू. इन एडिशन टू वाला जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे. So the constitutional validity of economically weaker section quota was discussed in Jan Hit Abhiyan versus Union of India. EWS लिखना बेटा, EWS. It was discussed in Jan Hit Abhiyan versus Union of India 2022. Recent judgment है. जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022. 103rd constitution amendment cannot be said. 103rd constitution amendment cannot be said. यार CAA लिख लिया करो, पूरा लिखते हो ऐसे. CAA constitution amendment, पूरा क्यों काट रहे हो? Constitution amendment can be said. 103rd constitution amendment can be said to be, cannot be said to be violative of the basic structure, cannot be said to be violative of the basic structure, cannot be said to be violative of basic structure of the constitution by permitting the state to make special provisions, by making special provisions, by permitting the state to make 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 special provisions for the welfare of, for the welfare of, for the welfare of citizens on economic criteria, for the welfare of citizens on economic criteria. Number two, by permitting, number two, by permitting reservation in admission, by permitting reservation in admission, by permitting reservation in admission in private unaided institutions, in private unaided institutions, private unaided institutions, private unaided institutions, private unaided institutions, very good. Private unaided institutions, very good, मत लिख देना. ठीक है. नंबर 3, in excluding, permitting reservation in admission, by permitting reservation to EWS in private unaided institutions. Number 3, by excluding, नंबर 3, मैं फिर से एक बार बोल दूंगा, अभी थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट, बाय एक्सक्लूडिंग SCBCs, बाय एक्सक्लूडिंग SCBCs, OBCs, SC and ST from the scope of EWS, by excluding SCBCs, SC and STs from the scope of EWS reservation. नहीं, OBCs भी, हाँ OBCs भी इंक्लूडेड है, SCBCs है ना,
SCBCs और OBCs जो है ना वो दोनों हम इंटरप्रेट करेंगे इन द लाइट ऑफ 15(5) रेड विद 16, दोनों को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप आर्टिकल 16 पढ़ते हो ना, यहाँ पे तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मिलता है 15 में। जब आप 16 की बात करते हो तो देखो क्या लिखा है, 15(4) पढ़ो, बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजंस। 16(4) में सोशली एंड एजुकेशनली वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है। तो दोनों को हम पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी है और बैकवर्ड क्लासेस जो 16(4) में दे रखा है वो क्या क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पे जो प्रीफिक्स है वो हटा दिया है, वो भी पढ़ना जरूरी है। सो देखो क्या है, सो 103rd CAA Constitution Amendment, 103rd Constitution Amendment is 103rd Constitution Amendment was upheld the constitutionality, ऐसे लिखो, the constitutionality of 103rd Constitution Amendment was upheld, which provides the constitutional validity of 103rd Constitution Amendment was upheld, which provides 10% reservation in appointment, which provides 10% reservation in appointment, which provides 10% reservation in appointments to the post, which provides 10% reservation in appointment to the posts under the state and admissions to educational institutions and admissions to educational institutions and admissions to educational institutions to the EWS, to the EWS, to the EWS category, to the EWS category. Was also kind of vote bank के लिए 2019 election year. ठीक है, एक और पॉइंट लाइन लिख लो, EWS is considered to be valid. Reservation on the basis of EWS, reservation on EWS is valid. Reservation on the basis of EWS is valid for reservation or compensatory discrimination reservation singularly, discrimination, देखो, reservation solely on the basis of economic criteria, reservation solely on the basis of economic criteria, reservation solely on the basis of economic criteria, reservation solely on the basis of economic criteria does not damage the basic structure of the constitution, does not damage the basic structure of the constitution, does not damage the basic structure of the constitution, does not damage the basic structure of the constitution, does not damage the basic structure of the constitution. It's not a game, it's a rich thing.